Hello everyone. Today's topic is cardiovascular system and physiology of heart. Cardiovascular system. In order to pump blood through the body, the heart is connected to the vascular system of the body. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है? पंप होता है ब्लड थ्रू बॉडी. इट इज़ द क्लोज सिस्टम. और इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है बॉडी को और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. द कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है. तो हार्ट में इट इज़ द पंप कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर है, 2 आर्टरिया है और 2 वेंट्रिकल है. The heart provides the driving force from the cardiovascular system. And blood vessels में the blood vessels are system of tube including artery and arterioles which carry the blood from the heart to the all part of the body. Artery blood vessels क्या काम क्या करता है? artery arterioles कैरी करता है ब्लड को. जो आर्टरी आर्ट्रियोल्स है वो ब्लड को कैरी करता है और हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी को पहुंचाता है. द आर्टरीज सर्व्स एज ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू द ऑर्गन. और ये जो आर्टरी है वो सारे ऑर्गन को ब्लड पहुंचाता है. वेन्यूज एंड वेन्स है विच कैरी द ब्लड बैक टू द टिश्यू टू द हार्ट. और जो वेन है और वेन्यूज है वो कैरी करता है ब्लड को टिश्यू से हार्ट में पहुंचाने का काम करता है. तो वेन सर्व्स ए ब्लड रिजर्वायर. जो वेन है वो उसमें बहुत सारा ब्लड का रिजर्वायर है एंड कलेक्ट ब्लड टू रिटर्न टू द हार्ट. पूरे ह्यूमन बॉडी में ब्लड कैपिलरी है which form a network of fine vessels connected the arteriole and venules. और ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो आर्ट्रियोल से भी कनेक्टेड है और वेन्यूल से भी कनेक्टेड है. इसका भी वही काम है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स and waste product between blood and tissue. Construction of the CVS. Construction of the CVS. The cardiovascular system is actually made up of two major circulatory systems acting together. तो दो सिस्टम है, एक राइट साइड ऑफ द हार्ट. जो राइट साइड के हार्ट चैम्बर्स है वो पंप करता है ब्लड को थ्रू लंग टू द पल्मोनरी आर्टरी. जो राइट साइड का हार्ट है वो पंप करता है ब्लड टू द लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी कैपिलरी एंड रिटर्न टू द ब्लड to the left atrium through pulmonary vein. जो राइट साइड के हार्ट है वो पंप करता है ब्लड थ्रू लंग के थ्रू. जो राइट साइड का हार्ट है वो ब्लड पहुंचाता है लंग के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में और वहाँ से पल्मोनरी कैपिलरी से रिटर्न होता है ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में. और ये लेफ्ट आर्टरियम के थ्रू पल्मोनरी वेन में जाता है. फिर लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आयोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल एंड
systemic capillary, then return blood to the right atrium to venule of the great vein. The systemic circulation. It is a start in the left ventricle, then go to aorta, then systemic arteries, systemic capillaries, systemic vein, superior inferior vena cava, and end in the right atrium. The pulmonary circulation. It start in the right ventricle to pulmonary trunk, pulmonary arteries, pulmonary capillaries, pulmonary vein, and end in the left atrium. The two circulation are in the series, so blood finishes one circulation to start to the another. Systemic and pulmonary circulation. The muscle contraction of the left side of the heart is larger and strong than the right heart because of the greater pressure required in the systemic circulation. Basic function of the various part of the heart. Left side of the heart acts as a pressure pump that pumps blood into the systemic arteries at the sufficient pressure that drives the blood to the tissue. The right side of the heart, low pressure side, pump the blood to pulmonary arteries and relatively lower pressure that drives the blood into the lung. Blood vessels. The arteries. The aorta and pulmonary arteries are the elastic arteries. They have property to stretch, distension and recoil. During ventricular contraction, they distended by blood ejection into them and energy is loaded in their wall. During ventricular relaxation, diastole, the energy is released during elastic recoil of the valve, which acts as a additional pump to the blood during diastole. The ventricular contraction systole is distended by the blood ejection into them and energy is loaded their wall. During ventricular relaxation diastole, the energy is relaxed during the elastic recoil of the valve, which acts as additional pump to the blood during diastole. General function of the CVS. The normal function of the CVS is maintain hemostasis. What is hemostasis? That is constant optimal internal environment. Thus, it is the spite of continuous metabolic activity of the tissue cell. Physiological anatomy of the heart.
The heart is the great central pump of the cvs. It lies in the left side of the thoracic cavity, partially between sternum and between right and left lung. It covered by fibrous sac called pericardium. पेरिकार्डियम है जो आउटर पार्ट है और ये कवर रहता है फाइब्रस सैक से. General structure of the heart. The heart is the hollow muscular organ. Its wall are the composed of muscle called cardiac muscle or their myocardium. Human heart consists of four chambers, two arteria, left or right or left, which separate from each other by interarterial septum. Two ventricles, right and left, which separated from each other by the interventricular septum. The wall of the left ventricle is about 3 times thicker than the wall of right atrium. The ventricular myocardium is much thicker and stronger the arterial myocardial wall. The arterial muscles, both arteria completely separated from the ventricular muscle by fibrous ring is called AV ring और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग. दो आर्ट्रिया है लेफ्ट और राइट और दोनों को कौन अलग करता है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. दो वेंट्रिकल है राइट और लेफ्ट विच उसको कौन अलग करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा मोटा है, 3 टाइम थिकर है राइट वेंट्रिकल के. जो इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है द वॉल ऑफ मच थिकर एंड स्ट्रॉन्गर इज आर्टेरियल मायोकार्डियम. आर्टेरिया का मेनली दो फंक्शन है. दे आर as a blood reservoir for the blood returning back to the heart. Arteria, they act as a pumps. Cardiac valves and their function. The human heart contains four valves. Two arterioventricular valve, AV valve, between arteria and ventricle. These are tricuspid valve and mitral valve. जो ट्राइकप्सिड वाल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है. जो ट्राइकप्सिड वाल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है और जो मिट्रल वाल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है. टू सेमिनुलर वाल्व है अयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व. जो अयोटिक वाल्व है वो बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल, जो अयोटिक वाल्व है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में है और जो पल्मोनरी वाल्व है वो बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में है. जो राइट वेंट्रिकल है पंप्स रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एट ए लो प्रेशर थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन. और लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंप
through the systemic circulation. Thank you.